Welcome to the day 5 guys. Today we are to solve some BFS and DFS problems that are going to be on higher difficulty level than our previous video. तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बेसिक ऑफ BFS DFS समझाया था और कुछ बेसिक सिनेरियोज में BFS और DFS लगा के दिखाया था. But in this video, our main target is to understand in what kind of problems we prefer to use BFS and in what kind of problem we prefer to use DFS. तो हम लोग को ये समझना है कि कौन सी प्रॉब्लम हम BFS से सॉल्व करना प्रेफर करते हैं और कौन सी DFS से. So without wasting any time, let's just get started and we will tackle this problem as our first problem, that is shortest path in a grid with obstacles elimination. Okay, so you are given an m into an integer matrix grid where each cell is either 0, empty or 1 obstacle. You can move up, down, left or right from and to an empty cell in one step. Okay, great. तो हम लोग को एक मैट्रिक्स दी गई हुई है जिसमें हर सेल में या तो वैल्यू 0 है या 1. If the cell is empty, then the value is 0. If the cell value contains 1, then it's an obstacle. Okay, we can move up, down, left or right from and to an empty cell in one step. Okay, so in one step I can move to an from one empty cell to another empty cell in four direction, right? यानी मैं चार डायरेक्शन में एक empty cell से दूसरे दूसरे empty cell जा सकता हूँ. सिर्फ empty cell में मैं मूव कर सकता हूँ. I can't move in obstacle cell. Okay, great. Return the minimum number of steps to walk from the upper left corner. Okay, this is the upper left corner, this is our 0 comma 0, to the lower right corner m minus 1 comma n minus 1 to reach here, given that you can eliminate at most k obstacles. So we are given an extra value, that is we can eliminate at most k obstacles, right? So this particular thing, that is k obstacle, is nothing but that this k value, that we can remove one obstacle in this particular path or this particular obstacle in our path. So कुछ खास नहीं होगा. ये जो वन है ना, इसको जीरो स्विच कर देंगे या ऐसे काउंट कर लेंगे. यानी जनरली हम इस सेल में मूव नहीं कर सकते थे बिकॉज वी वर ओनली अलाउड टू मूव फ्रॉम वन एम्प्टी सेल टू अनदर. लेकिन अब ये हम इसे स्वैप कर सकते हैं या ऑब्स्टिकल को रिमूव कर सकते हैं, तो इसे भी हम एम्प्टी सेल कंसीडर करेंगे, मूव कर लेंगे, बट इट विल डिक्रीज आर के वैल्यू. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, given that you need to return the minimum number of steps to walk from the upper left corner to the lower right corner. Okay, if it is not possible to find such a walk, return -1. अगर हम ऐसा पाथ नहीं फाइंड आउट कर सकते जिससे हम अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर तक पहुंच सकें, then we will return -1. Okay, so for better understanding I have created this diagram. Let's just take the k value, k is equal to 1 for this particular problem. Okay, तो हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग इनिशियली इस सेल पे हैं, हमको रीच करना है इस सेल पे. ग्रेट. नाउ व्हाट वी कैन डू इज अ सिंपल BFS और DFS टू रीच दिस पर्टिकुलर सेल. ओके, तो पहला केस हम जो कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे विदाउट दिस के. अभी मेरे लिए के एग्जिस्ट ही नहीं करता. ओके, तो अगर मेरे लिए इस क्वेश्चन में के ना होता तो मेरे पास क्या होता भाई, इफ देयर इज नो के फॉर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन मैं इस सेल पे स्टैंड कर रहा हूँ. Now from this particular cell I can move in four direction of empty cell. So ये सारे empty cell हैं मेरे, तो इनमें जीरो फिल कर देते हैं. ओके, नाउ इस प्रॉब्लम को पहले DFS से सॉल्व करेंगे, देन BFS से सॉल्व करेंगे, और उसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई वी प्रेफर BFS इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम रेदर देन DFS. ओके, चलिए समझते हैं. तो अभी मेरे पास के है ही नहीं, अब मुझे सिंपल DFS करना है. तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे एक्सप्लेन करा था, हम DFS में हमने एक स्टैक बना लेते हैं अपने लिए. ओके, सो दिस इज़ माय स्टैक. इनिशियली मैं अपने स्टैक में सबसे पहले 0,0 वाले सेल को पुश करूँगा. तो मैंने अपने स्टैक में 0,0 पुश करा दिया. ग्रेट. नाउ फ्रॉम दिस 0,0 वेयर आई कैन मूव, मैं या तो इस सेल में मूव कर सकता हूँ वन डायरेक्शन, I can move to this cell second direction, here third direction and here fourth direction. ये दोनों सेल आउट ऑफ द ग्रिड जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, तो ये फॉल्स हो गए. ग्रेट. अब ये सेल ऑब्स्टिकल सेल है, अभी मैंने के को कंसीडर ही नहीं करा हुआ तो मैं इस सेल में मूव नहीं कर सकता. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मूव टू दिस पर्टिकुलर सेल. तो अब मैं कहाँ पहुँच गया, 0,1 में. ओके, ग्रेट. नाउ सिमिलरली 0,1 से भी मैं ऐसे ही सिमिलर फोर डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ. अब मैं अपर साइड नहीं मूव कर सकता, आई विल गो आउट ऑफ द ग्रिड. मैं लोअर साइड नहीं मूव कर सकता बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्टिकल इन दिस पर्टिकुलर ग्रिड. नाउ आई कैन मूव बैक, बट अगर मैं मूव बैक करूँगा फिर से मैं इसी सेल पे पहुँच जाऊँगा, राइट?
और फिर वही साइकिल वाला सिनेरियो हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बीएफएस और डीएफएस में जब हम लोग कर रहे होते हैं किसी ग्राफ में, देन दे कैन बी अ साइकिल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और ना ग्रिड बना लेंगे सिमिलर साइज की और सिमिलर नंबर ऑफ सेल की, एंड व्हाट वी विल डू इज जस्ट कि जो सेल विजिटेड होता जाएगा तो उसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे, उसको ट्रू कर देंगे इस ग्रिड में और चेक कर लेंगे। तो जब हम लोग इस सेल पे दोबारा अगर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे तो ये सेल पहले ही हम लोग के विजिटेड में चेक होगा कि ये सेल पहले से विजिटेड है, तो हम यहाँ विजिट नहीं कर सकते। ओके ग्रेट, सिंपल सिनेरियो, सिंपल केस। तो हम लोग इस सेल पे मूव करेंगे। नाउ एज सुन एज वी मूव टू दिस सेल, हम इसे अपने स्टैक में पुश करा लेंगे और इसी सिमिलर सिनेरियो की तरह हम यहाँ पे मूव करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, यहाँ, एंड देन वी विल रीच टू दिस पर्टिकुलर सेल, दैट इज आवर लास्ट सेल। ओके, तो इसने क्या किया, इसने ये पूरा पाथ लिया। ओके, इसने ये पूरा पाथ लिया इसको सॉल्व करने के लिए। ओके ग्रेट, यानी कोई बड़ा सिनेरियो तो है नहीं कि इसने ये पूरा पाथ लिया। नाउ अगर हम लोग के सेल को रिमूव कर सकते थे, एक के सेल हम रिमूव कर सकते थे इसमें से, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या आता, राइट। तो हम लोग के पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या आता, तो उसको कंसीडर करने के लिए जरा सा लेट्स जस्ट क्लियर दिस पर्टिकुलर ग्राफ और आर। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज रिमूव के। तो मैंने इनिशियली फिर से अपना 0,0 पुश कर दिया अपने स्टैक में, राइट। हम 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अभी भी हम अपर और लेफ्ट साइड में मूव नहीं कर सकते बिकॉज वी विल गो आउट ऑफ द ग्रिड। नाउ कंसीडर दिस केस, अब मेरे पास दो पाथ हैं, एक तो ये पाथ है और एक ये पाथ है। अगर मैं इस पाथ पे गया तो मुझे ये ऑब्स्टिकल रिमूव करना पड़ेगा। मेरी के की वैल्यू 1 है, सो दैट मीन्स आई कैन रिमूव वन ऑब्स्टिकल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रिड। सो आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल फ्रॉम माई ग्रिड एंड आई विल जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं अभी यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ कि नाउ दिस पर्टिकुलर सेल टर्न्स 0 एंड आई कैन मूव टू दिस सेल। सो नाउ इफ आई कैन मूव टू दिस पर्टिकुलर सेल, ठीक है, लेकिन अब के की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, राइट। लेकिन अगर मैंने ये पाथ पिक करा हुआ है तो मेरी के की वैल्यू अभी भी क्या है, 1, राइट। नाउ सिमिलर केस सिनेरियो, अभी मैं डीएफएस कर रहा हूँ, बीएफएस की तरह नहीं कि मैंने पूरा वो कर दिया, तो ये बस मैंने आपको केस कंसीडर करके बताया था। अब क्या होगा, ये अपना पाथ में अभी वाला पाथ ट्रैवल करते हैं, देखते हैं इससे जो हम लोग का पहला पाथ था, पहले पहला पाथ मार्क कर देते हैं जो हमने फर्स्ट केस में कंसीडर किया था। अगर हम लोगों ने कोई भी रिमूवल नहीं करा तो हम कौन से पाथ से जाएंगे, हम ये पाथ से ट्रैवल करेंगे। ओके ग्रेट, ये हम लोग का फर्स्ट पाथ है। अब मैं इस पाथ सेल पे खड़ा हूँ, ओके, इस सेल से मैं इस सेल जा सकता हूँ, के की वैल्यू अभी भी 1 है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, अब 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो सेल था ये भी 0 हो गया। अब मैं ये पाथ ले सकता हूँ, देन आई कैन गो हियर और फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ, ये पाथ ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं कहाँ चला जाऊँगा, बाहर चला जाऊँगा, तो ये पाथ मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब एक पाथ यहाँ से ये गया, मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ और फिर एक और ये, तो ये हम लोग का सेकंड पाथ हो गया। ओके, अब तक हम लोगों ने कितने पाथ देखे, 2 पाथ देख लिए ग्रिड में। ओके ग्रेट, नाउ हम लोगों ने 2 पाथ देख लिए ग्रिड में। हाँ, 2 पाथ देखने के बाद अब हम एक और पाथ कंसीडर करते हैं। हम यहाँ से जाएंगे, वी विल गो हियर 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 एंड नाउ आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर वन, के की वैल्यू 0 हुई, हमने इसको 0 स्विच किया और एक ये पाथ मिल गया। तो अब तक हम लोगों ने कितने सारे पाथ देख चुके हैं, एक ये पाथ देखा, एक ये पाथ देखा, एक ये है। ओके, एक और पाथ था हम लोग के पास, सो दिस पर्टिकुलर पाथ विल गो ऑल दिस वे टू दिस, दीज आर 3 पाथ सो फार, राइट। और ये सारे पाथ पूरी डेप्थ तक ट्रैवर्स हो रहे हैं फर्स्ट, तो यानी ये एक बार पूरा स्टैक में जाएगा और पूरा पाथ होगा, उसके बाद हम लोग इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे समहाउ, और सिमिलरली ये पूरा पाथ जाएगा और ये पूरी पाथ में ट्रैवल करेगा और ये एक अपना भी ये वाला पाथ ट्रैवल करेगा जिसमें हमने इसमें 0 कर दिया, तो ये एक और पाथ हो गया, राइट। सो दीज आर ऑल द पाथ दैट आई कैन टेक सो फार, राइट। अभी एक और पाथ बना देते हैं जिसमें लास्ट रिमेनिंग पाथ है कि अगर इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे चले गए, तो आपने देखा इतने सारे पाथ ले सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिगर है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम लोग काफ़ी सारे पाथ ले सकते हैं, वी कैन टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ पाथ्स, राइट। और इनमें से हर एक पाथ अपने आप को कंप्लीट करेगा, चाहे वो या तो लास्ट सेल पे रीच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हमें हर बार एक पूरा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। पूरा पाथ डेप्थ तक ट्रैवल करेंगे हम, और उसके बाद वो पाथ हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी डिस्टेंस की होगी, या वो डिस्टेंस सेल रीच कर पाए या ना कर पाए वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन अगर वो सेल पे रीच कर रहा है तो अपनी डिस्टेंस रिटर्न करेगा।
अच्छा रिटर्न करेगा, ठीक है, मैंने वो डिस्टेंस स्टोर कराई। अब मैं हर एक पाथ लेने बैठूंगा तो देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। ग्रिड लेंथ m×n 40 है इस केस में, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी 14 into 40 काफ़ी बड़ा हो सकता है ना। इट विल बिकम 1600 सेल्स में कितने सारे पाथ हो सकते हैं हम खुद नहीं सोच सकते कि 1600 सेल में कितने पाथ हो सकते हैं। सो इट वुड बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स, यानी हर बार एक पूरा स्टैक जाएगा, वो अपना स्टैक मेंटेन करेगा और पूरी डिस्टेंस लेके आएगा, फिर पूरा स्टैक एम्प्टी होगा वहाँ तक का जहाँ तक का सेल आ चुका होगा, फिर वो जी दूसरा स्टार्ट करेगा। क्योंकि ये तो डीएफएस है, वो अपना पूरा एक पार्ट ट्रैवल करके डिस्टेंस निकाल के फिर भेजेगा, फिर एक और डीएफएस चलेगा उसी सेल से, ऐसे हर सेल से चल सकता है। तो सोचिए 1600 सेल्स हैं एक ग्रिड में, और हर 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 सेल से मान लीजिए अगर सिर्फ 5 हम लोग की और 5 डीएफएस पास चल रहे हैं हर सेल से, तो हम लोग के कितने पास आ जाएंगे, राइट। सो इट वुड बिकम अ क्वाइट अ लार्ज फिगर अगर ऐसे ही देखा जाए सिंपली। तो डीएफएस को मैं क्या समझने की कोशिश करता हूँ, फॉर माई जनरल परस्पेक्टिव, अ डीएफएस इज मोर लाइक अ बैटमैन। कि डीएफएस इज मोर लाइक अ बैटमैन। बैटमैन क्या करता है, बैटमैन एक सिंपल ह्यूमन है, तो वो ब्रूट फोर्स करता है, वो हर पाथ ट्रैवल करता है, और जिस पाथ में उसे बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है वो उसे स्टोर करा लेता है जब तक उसे फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अब सिंस वो बैटमैन है, उसके पास इसके सिवा कोई और सॉल्यूशन है नहीं कि बेस्ट सॉल्यूशन वो फाइंड आउट कर सके, राइट। एट लास्ट ही इज अ ह्यूमन। और डीएफएस क्या है, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है जिसमें हम सारे पाथ ट्रैवल करके देखेंगे कि कौन सा पाथ बेस्ट है। जो पाथ हमें सारे ट्रैवल करने में मिल जाएगा वो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा, राइट। अच्छा, ये जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो जाएगा, हम लोग इसमें डीपी लगा सकते हैं, लेकिन रिडंडेंट होने के साथ साथ हमारा स्पेस भी कंज्यूम हो रही है, और नंबर ऑफ नोड जो हम बार बार विजिट कर रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा है, राइट। ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाई वी विल यूज बीएफएस। तो अभी हम लोगों ने समझा कि डीएफएस क्या है। डीएफएस एक बैटमैन की तरह है जो हर एक सेल से हर एक पाथ को चूज करेगी और चेक करेगी कि ये पाथ कितनी डिस्टेंस देगा और ये कितना सॉल्यूशन देगा, और उसके बाद फाइनेस्ट पाथ ला के देगी, ओके राइट। लेकिन ये इतना बड़ा ब्रूट फोर्स हो जाएगा, और अगर यही नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा हाई हुए तो ये फेल कर जाएगी, राइट। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि एक और सिनेरियो हो सकता है कि ये लॉन्गर पाथ को पहले कंसीडर कर ले और शॉर्टर को बाद में, क्योंकि ये डीएफएस है, ये अपना कोई एक डेप्थ के लिए किसी एक पाथ को कंसीडर करेगी। हो सकता था कि यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे भी ये ज़ीरो, राइट। लेकिन डीएफएस के लिए मैं इस सेल से पहले जाना स्टार्ट कर दूँ और उसके बाद मैं इस पाथ से जाऊँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस पाथ। कोई भाई डीएफएस का कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं कि वो पहले यहीं पे मूव करेगी, मैं शॉर्टेस्ट पाथ ही पकड़ूंगी, नहीं ना। तो मैंने पहले लॉन्गेस्ट पाथ कंसीडर करा, उसके बाद ये लॉन्गेस्ट पाथ मैंने चेक करा, उसके बाद हो सकता है मैं लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ से ऑब्स्टिकल रिमूव करके कंसीडर करूँ, उसके बाद तब कहीं जाके मैं 4-5 ट्रैवर्सल जब कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं कहीं जाके पाथ चेक करूँगा। दैट वुड बी वेरी यूजलेस, ओके। नाउ व्हाई वी यूज बीएफएस, राइट। सो बीएफएस इज लाइक सुपरमैन, राइट। BFS is like Superman. Why? Because Superman can reach cell very fast. Okay. ऐसा क्यों भाई? देखिए, ये मेरा सेल है, इस सेल से मैं अगले लेवल में जाना चाहता हूँ। मैं बीएफएस को हमेशा लेवल की तरह समझता हूँ कि इस बीएफएस से मैं अगले लेवल में जाना चाहता हूँ। तो मेरा अगला लेवल कौन सा होगा? ये मेरा अगला लेवल, सॉरी, ये मेरा अगला लेवल होगा, राइट। ये मेरा अगला लेवल होगा। तो सुपरमैन एक बार में ही इन दोनों को अपने क्यू में डाल लेगा कि भाई ये मेरा अगला लेवल है। अच्छा, अभी मैं ऑब्स्टिकल रिमूवल के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ऑब्स्टिकल रिमूव करे हैं कि नहीं करे हैं, तो ये वाला सेल नहीं आएगा क्योंकि ऑब्स्टिकल रिमूव करना अलाउड नहीं है अभी, लेकिन ये वाला सेल आ जाएगा, राइट। ये वाला सेल आ गया। अच्छा, अब ये वाले सेल से कौन से सेल में जा सकते हैं? ये वाला सेल भी कहेगा कि मैं भी सुपरमैन हूँ, मुझे भी ऑब्स्टिकल रिमूव करना आता है, तो ये भी अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और ये इसकी नेक्स्ट लेवल की बीएफएस ट्रैवर्सल हो गई। तो इसने ये विजिट कर लिया, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे जा सकता था। उसके बाद ये सेल आएगा, ये भी अपनी नेक्स्ट ट्रैवर्सल कर सकता है, यहाँ आ गया। ये भी सेल आ गया, अब ये भी अपनी नेक्स्ट ट्रैवर्स कर सकता है, ये भी यहाँ आ गया, राइट। उसके बाद ये आ जाएगा, ये भी अपना बीएफएस। अच्छा, ऐसा करते हैं ऑब्स्टिकल रिमूवल के साथ करते हैं, क्योंकि ऐसे समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है इसमें, ओके राइट। ऐसा करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे क्यू बना देता हूँ।
ओके, सो दिस इज़ माई क्यू। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बी एफ एस ट्रैवर्सल करना चाहता हूँ विद ऑब्स्टिकल रिमूवल। तो अभी मेरे पास k इज इक्वल टू 1 है, तो यानी मैं एक ऑब्स्टिकल रिमूव कर सकता हूँ। नाउ लेट्स जस्ट गो। मैं सुपरमैन हूँ, मैं एक लेवल पूरा एक बार में मूव कर सकता हूँ। मैं बैटमैन की तरह पूरा एक डेप्थ में नहीं जाता, मैं एक पूरा लेवल ही निपटा देता हूँ एक बार में। तो मैंने ये पूरा लेवल निपटा दिया। अब ये लेवल निपटाया तो ये सेल तो मैं मूव कर सकता था इजीली, तो 0,1 तो मैं अपने क्यू में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन इस सेल पे मूव करने का एक हम लोग के पास प्रॉब्लम इशू है कि हमें ऑब्स्टिकल चेक करना पड़ेगा कि क्या k इक्वल टू 1 है। अगर मैं k इक्वल टू 1 है और मेरे पास वैल्यू हायर है कि मैं ऑब्स्टिकल रिमूव करना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं इसे रिमूव करके यहाँ मूव कर जाऊँगा, राइट। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल मैं फिर से बी एफ एस चलाऊँगा। अब इसकी बी एफ एस किसको कवर करेगी, इसके नेक्स्ट लेवल को। लेकिन ये भी नेक्स्ट लेवल हो सकता था, लेकिन टू अवॉइड दिस मैंने विजिटेड एरे बना रखा है, तो उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं होगा। विजिटेड मैट्रिक्स मैंने बना रखी, तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इन दो सेल को कंसीडर करूँगा जिनमें मैं मूव कर सकता था। अच्छा, अभी तक अगर मैं डी एफ एस कर रहा होता तो मैं अभी तक शायद ये सेल और ये सेल मूव आउट कर पाया होता, और उसके बाद मैं यहाँ आया होता। लेकिन अब तक मैंने सिर्फ दो दो पुश में चेक कर लिया कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, राइट। अब यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, अगेन मैं ये सेल विजिटेड हो चुका है, मैं यहाँ जा सकता हूँ। सो दिस इज़ माई बी एफ एस। मैं यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद मैं फिर एक बी एफ एस मारूंगा, राइट, मैं यहाँ पहुँचा। अब ये जो बी एफ एस है ना, ये बी एफ एस ये पूरा कंसीडर करेगी, राइट। ये जो हम लोग का वन वाला सेल है ये नहीं, लेकिन ये जो है ना इसको पूरा एक बार में देख लेगी। क्यों? क्योंकि ये सुपरमैन है। ये एक बार में ही चेक कर लेगी कि इस लेवल में जो मेरे नेक्स्ट लेवल हैं उनमें से अगर भाई देखो कि मेरे पास ऑब्स्टिकल रिमूव करने की पावर है, तो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा और मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। अगर रिमूव करने की पावर नहीं भी है तो भी मैं ऐसे ही यहाँ आ सकता हूँ, राइट। सिंपल सी बात। अच्छा, फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर अगर यहाँ पे अभी मैंने के ऑब्स्टिकल रिमूव नहीं करे हुए हैं, तो क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मैं कौन से सेल पे रीच कर सकता हूँ, मैं यहाँ रीच कर सकता हूँ, एक बार में रीच कर जाऊँगा। फिर मैं ऐसे ही यहाँ पे आऊँगा, मैं कहाँ रीच कर सकता हूँ, मैं एक बार में यही रीच कर सकता हूँ। अगर मैं इस सेल से आ रहा हूँ तो मैं एक बार में ये पूरा रीच आउट कर सकता हूँ। तो ये होती है ट्रैवर्सल की पावर जो हम लोग के सुपरमैन के पास है। देख रहे हैं, जो हम लोग के पास एक पूरा बैटमैन डीएफएस करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पूरे सारे पाथ कंसीडर कर रहा था, और हो सकता था लॉन्गेस्ट पाथ कंसीडर करें। वहीं सुपरमैन ने क्या करा, पूरे पूरे पाथ एक बार में ही निपटा दिए, पूरे पूरे पाथ निपटा दिए। उसने एक बार में ही चेक कर लिया कि इस लेवल में कितने वैलिड सेल हैं, उनको क्यू में डालो भाई। इस लेवल में कितने वैलिड सेल हैं ऑब्स्टिकल रिमूव करके, उनको क्यू में डालो भाई। यहाँ पे कितने वैलिड सेल हैं ऑब्स्टिकल रिमूव करके, उनको भी डालो। तो क्या होगा कि हम लोग की जो ट्रैवर्सल है, जो नंबर ऑफ पाथ हम लोग ने टेक आउट करे थे, वो कितने घट गए एज कम्पेयर टू द डी एफ एस, राइट। इफ माई सोल्यूशन इज़ नॉट दैट मच एक्सप्लेनेटरी, तो आई एम दैट, तो मैं भाई थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई मे नॉट हैव डन दैट गुड, बट ओके, बट लेट्स कीप गोइंग सर। सो क्या हो सकता है कि जो हम लोग भाई डी एफ एस कर रहे थे उसमें हम सारे पाथ जाके चेक कर रहे थे, देख रहे थे। अब जो हम लोग की बी एफ एस है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिंपली जा रहे हैं हर लेवल में जाके जितने भी वैलिड सेल हैं हमारे पास उनको एक बार में क्यू में डाल देते हैं। मैं एक बार में क्यू में बोलता हूँ क्योंकि ये क्यू में समझने में बेटर आता है, क्योंकि एक बार में हम क्यू में अपना पूरा एक लेवल डालते हैं ना। हम एक के बाद एक पुश करते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम डालते तो पूरा एक लेवल ही है ना एक बार में। तो ये पूरा लेवल एक बार में कवर हो गया है। इसी तरह ये पूरा लेवल एक बार में कवर हो गया। अब यहाँ से सिर्फ हम यहाँ जा सकते थे, अब हम लोग एट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, वरना इस डायरेक्शन में एट डायरेक्शन में मूव कर पा रहे होते, तो ये पाथ हम लोग का बी एफ एस से और आसान हो जाता, राइट। तो ये एक बार में पूरा ट्रैवर्स कर गया, ये जो पाथ था ये पूरा एक बार में ट्रैवर्स कर गया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग डी एफ एस फॉर ईच पाथ, हर सेल से जितनी भी डी एफ एस निकलेंगे उनको करने के बजाय हम लोग जो पूरे पूरे एक बार में पाथ कवर कर पा रहे हैं, वो पावर हमें बी एफ एस से मिलती है, राइट। तो जो हम लोग के नंबर ऑफ ट्रैवर्सल हैं वो बहुत घट जाते हैं। दैट इज़ वाई वी प्रेफर बी एफ एस फॉर कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने की प्रॉब्लम है उन्हें हम बी एफ एस से प्रेफर करते हैं सॉल्व करना एज कम्पेयर टू डी एफ एस, बिकॉज हमें नंबर ऑफ ट्रैवर्सल रिड्यूस करने हैं। हम डी एफ एस से भी उस चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, वी कैन सॉल्व डेफिनेटली फ्रॉम डी एफ एस, but if we use BFS, then the number of traversal we are taking that reduce significantly for large set of problem or large number of set, and also we can do much better, okay, right। तो ये हो गया मेन चीज।
अब एक चीज़ आपको बस समझ लेनी है कि जब आपको छोटा पार्ट ढूंढना हो तब आप सुपरमैन का यूज़ करते हैं, और बैटमैन का आप तब यूज़ करते हैं जब आपको सारे पाथ और हर पाथ आपको कंसीडर करना हो, क्योंकि बैटमैन हर एक पाथ कंसीडर करेगा, सुपरमैन भी हर एक पाथ कंसीडर करेगा, लेकिन बहुत फास्ट फास्ट। लेकिन अगर वही बैटमैन है वो हर एक बात को कंसीडर करेगा, लेकिन कई ऐसे केस होंगे जहाँ पे बैटमैन लॉन्ग पाथ पे पहला चला जाएगा, उसके बाद शॉर्ट पे हाथ पे आएगा, लेकिन सुपरमैन के पास पावर होने की वजह से वो शॉर्ट पाथ पे तुरंत तुरंत कैलकुलेशन कर लेता है। राइट, ओके। चलिए अब इसका हम एक कोड लिखने के लिए समझते हैं कि इसका कोड लिखने के लिए अगर मुझे BFS का कोड लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा। राइट, तो इनिशियली मैं अपने क्यू में अपने फर्स्ट सेल को पुश करूँगा। राइट, मैं सबसे पहले 0,0 को अपने क्यू में डालूंगा। राइट, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज डू अ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सन। मैं अपने नेक्स्ट लेवल के लिए जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मैं कौन से सेल पे जा सकता हूँ। मेरा क्यू मुझे बताएगा कि देखो मैं एक तो इस सेल पे आ सकता हूँ, एक तो इस सेल पे आ सकता हूँ। राइट, और जो ये प्रीवियस वाले सेल हैं कि जो हम ग्रिड से आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं ना, इसके लिए हम एक स्पेशल फंक्शन लिख देंगे जो ये चेक आउट करेगा कि कहीं हम लोग ग्रिड के आउटसाइड तो नहीं जा रहे हैं, यानी हम लोग जो अपनी ग्रिड है जो हम लोग ट्रैवर्सल कर रहे हैं उसमें आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, हम लोग ग्रिड के अंदर ही रहें। राइट, अच्छा। अब अगर मैं अपने नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता हूँ तो भाई 0,1 तो ईजिली पुश हो जाएगा क्योंकि वो एक एम्प्टी सेल है, लेकिन जो 1,0 है हम लोग का वो एक वन सेल है। अच्छा, तो अगर मैं इसे अपने क्यू में अभी डालना चाहता हूँ, ये मेरे एक पूरे लेवल को मैं डाल रहा हूँ और वैसे मैं अपने क्यू में डालना चाहता हूँ, तो मुझे अपने की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। राइट, अगर मैं अपनी के की वैल्यू अभी ऐसे डिक्रीज करके के ज़ीरो कर दूंगा तो मैं अपने आगे वाले किसी पाथ में के की वैल्यू डिक्रीज करके पाथ चेक ही नहीं कर सकता। अब मेरा की वैल्यू ज़ीरो हो गई है तो मैं अपने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी करूंगा तो मैं सिर्फ इसी में जा सकता हूँ, इसमें जा सकता हूँ, इसमें जा पाऊंगा। इन पाथ को मैं कभी कंसीडर ही नहीं करूंगा, ये पाथ मेरे मिस हो जाएंगे। तो मुझे एक ऐसा तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिससे मैं ये जो वन की वैल्यू है ना वो सिर्फ इसी पाथ के लिए कंसीडर हो, इसी सेल के पाथ के लिए कंसीडर हो, और इसके लिए ना कंसीडर हो जाए क्योंकि इसने तो कोई ऑब्स्टिकल रिमूव नहीं करा ना। ऑब्स्टिकल तो इस सेल के लिए रिमूव हुआ। राइट, इस सेल के लिए हमारे ऑब्स्टिकल रिमूव हुआ है, ना कि इसके लिए। तो बस इसको रहने देते हैं, कोई एक ऐसा तरीका स्टोर कर लें कि ये जो सेल की के की वैल्यू है वो इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है। राइट, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने क्यू में पेयर वैल्यू पास करूँगा। राइट, तो मैं पेयर वैल्यू पास करूँगा का मतलब क्या होगा कि मैं कुछ खास नहीं कर रहा, मैं बस ऐसा करूँगा कि जो मेरा सेल है तो मैं बता दूंगा कि 0,0 पे के की वैल्यू कितनी थी। राइट, तो ये जो पाथ है ना के की वैल्यू अभी 0,0 पे 1 थी, अब 0,1 पे भी के की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। लेकिन जब मैंने अपना 1,0 वाला सेल कंसीडर करा तब, क्योंकि वो एक ऑब्स्टिकल सेल था, तो मैंने के की वैल्यू उस सेल के लिए 0 कर दी। तो इस सेल से जितने भी पाथ अब कंटिन्यू होगी उनके लिए के की वैल्यू 0 होगी। तो अब क्यू में सिर्फ सेल पुश करने के बजाय मैं क्यू में एक पेयर पुश करूँगा जो कि होगा मेरा सेल एंड के, करंट की फॉर दैट सेल। ओके, चलिए ये चीज़ भी इजी है। अब मुझे क्या करना है भाई, हर लेवल को बस ट्रैवर्स करना है, के की वैल्यू मैं मेंटेन ही कर रहा हूँ। अगर मैं के की वैल्यू मेंटेन करके मिनिमम पाथ निकाल पाया इस यहाँ तक का, मैं उस मिनिमम पाथ को रिटर्न कर दूंगा। राइट, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू माई फाइनेस्ट, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आई विल ट्राई टू अटैच सम रिटन सॉल्यूशन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ लेट्स जस्ट वर्क इट। तो हमें स्टार्ट क्या करना है, हमें क्यू से स्टार्ट करते हैं। क्यू, मैं क्या पुश करा दूं, एक पेयर बना लें हम लोग कि एक वेक्टर पुश करा दें। पेयर और वेक्टर दोनों ही सेम ही चीज़ काम करेंगे हमारे पास, मैं वेक्टर यूज़ कर ले रहा हूँ अभी के लिए। वेक्टर इंट, लेट्स जस्ट कॉल दिस क्यू, और मैं क्यू में क्या पुश करा दूंगा, क्यू डॉट पुश। मुझे क्या पुश कराना है, 0,0 मेरा इनिशियल सेल और के की क्या वैल्यू। राइट, 0,0 और के की वैल्यू जो है अभी वो पुश करा देते हैं। ओके, ग्रेट। ऐसे कर लेते हैं आई कॉमा जे कॉमा के करके कुछ ऐसे वैल्यू स्टोर करा के पुश कराएंगे।
उन्हें रैंडमली पुश करा दिया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर ठीक है, 0,0 के ही पुश कराना है हमें इनिशियली, वैसे भी क्या ही करना। ओके ग्रेट, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज क्रिएट अ वेस्टेड मैट्रिक्स। ओके, तो हम लोग वेस्टेड मैट्रिक्स बनाए अभी। अच्छा भाई, वेस्टेड मैट्रिक्स बनाई, वेस्टेड मैट्रिक्स बनाए, तो वेस्टेड मैट्रिक्स इतने साइज की बनेगी, जितना ग्रिड का साइज है उतने ही साइज की हमारी वेस्टेड मैट्रिक्स बनेगी, राइट। तो हम क्या बना लेते हैं, बूल विजिटेड, और कितने सेल हैं इसमें, 40 और 40 सेल्स, राइट। बूल विजिटेड हो गया हमारा। इसके बाद क्या करना है हमें, हमने विजिटेड बना लिया और चेक करा दिया, क्या करें, अब हम चालू करते हैं अपनी बी एफ एस, वाइल नॉट क्यू डॉट एम टी। जब तक क्यू हमारा एम टी नहीं है तब तक क्या करेंगे, इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, क्यू का साइज निकाला, एन इज इक्वल टू, अच्छा एन तो ले ही चुके हैं, अब क्या करेंगे, वाइल एन माइनस माइनस साइज माइनस माइनस, सॉरी। अच्छा भाई, अब साइज माइनस माइनस चालू करा। अब जो क्यू के टॉप में क्या है हम लोग के पास, क्यू के टॉप में हमारे पास है एक वेक्टर, चलिए वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर इंट टेम, जो कि है मेरा क्यू का फ्रंट। So this is my queue front. I will just take it and just queue dot pop. Now what I need to do is get these particular row comma column cells and the value of my current key, right? So for that, int, what I can call it, I can call it cur I is equal to, okay, so temp 0, int cur j is equal to temp 1, right? And int cur k is equal to temp 2, right. These are the three values that our top is holding. Now from there onwards, what I need to do is, first thing first, I need to check that if cur I is equal to n minus 1, sorry, m minus 1, and the current j is equal to n minus 1, and we will be just returning, return what we need to return, that is, need to calculate number of steps, right. सो वी हैव नॉट कंसीडर्ड द नंबर ऑफ स्टेप्स, तो हम लोग को एक लेवल भी ले लेना चाहिए था ना, कि हम लोग कौन से लेवल पे चल रहे हैं, ये ट्रैक भी तो हमें रखना पड़ेगा ना। अब सुपरमैन जब चल रहा है तो वो कौन से लेवल पे पहुंच गया उसे ये पता होना चाहिए, तो इंट स्टेप्स हम लोग का इनिशियली तो 0 होगा, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या कर जाएंगे, स्टेप्स अपने, राइट। क्योंकि देखिए, सो सच अ क्लटर डायग्राम इट इज। तो सुपरमैन ये इनिशियली कौन से लेवल पे था, 0, ये लेवल 1 उसने पूरा ट्रैवर्स कर दिया। ये उसका कौन सा लेवल है, ये उसने लेवल 2 ट्रैवर्स कर दिया, ये लेवल 3 पे आ गया, फिर ये उसका लेवल 4 था, ये उसका लेवल 5 था, ये उसका लेवल 6 था, ये लेवल 7 था, अगर ऐसे जाता तो भी लेवल अलग था। तो ये लेवल ट्रैक करने के लिए मैंने स्टेप्स ले लिया, आप इसको लेवल भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं, एज यू सी फिट, राइट। अच्छा, अब ट्रैवर्स करने के लिए हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो अब डायरेक्शन 4 डायरेक्शन के लिए सेपरेट कॉल करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं, दैट इज नथिंग मोर देन कॉल्ड डायरेक्शंस, डायरेक्शंस। ओके, what is direction would be holding, it would be holding 4 directions. Okay, great. First direction is -1 comma 0, okay, that is 1 comma 0. The second direction is 0 comma minus 1,
The third direction is okay. So we have it. So what is the third direction? It is 1 comma 0. Okay, great. Now what is the next direction? It is 0 comma 1. These are my four direction, right? Great. Now on to the next steps. Okay, so far we have done this. Now what I need to do is traverse this particular direction array for. So there we go in right? In directions I have this particular cell. Now I will be moving to the next cell, right? So int okay, what it called new I, sorry, new I, right? New I is what? My current I plus dir 0. This is the first, and new j is nothing else than current j plus dir 1. Easy. Now we have reached our new row comma cell. Okay, now what I need to do is check if I'm not going out of bound. Okay, so if new I is less than 0, or new j is less than 0, or new I is greater than equal to m, or new j is greater than equal to n, right? आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ बाउंड, राइट? ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये हो रहा है तो कंटिन्यू, वी वोंट बी कंसीडरिंग दिस सेल इफ वी आर गोइंग आउट ऑफ द बाउंड। ओके, नाउ if grid, it is grid, right, it is grid. So if grid new I bracket new j is equal to 0, okay, this is a 0 and not have been visited with cell new I and new j. Okay, great. If we have not visited new I and new j so far, then do one thing, do simple q push, q dot push. I have already my new I and new j, so new I, new j comma k, because the k would remain same, current k. So I would push this current k, right? Nothing else. Okay, now what I need to do is mark this particular cell as visited because I visited this cell. New I, new j, sorry, these type of long code are something that I don't like. Okay, but what we can do is mark this as true. We have bool array, right? So mark this as true. Okay, now if grid new I, okay, new j is equal to 1, this is an obstacle cell. What will happen then? Then we will check what is my current k. If my current k is greater than 0, right? If my current k is greater than 0, then do one thing. Okay, but there's an issue. We can be getting stuck in a cycle in this particular cell, right? Consider, just say मैंने इस ऑब्स्टिकल को यहाँ से रिमूव करा, सॉरी, मैंने यहाँ से रिमूव करा। अब मैं यहाँ से भी तो यहाँ जा सकता हूँ, सो इट कैन बी विजिटिंग अगेन, राइट? तो साइकिल में ना फंस जाए, तो इसको भी विजिटेड चेक कर लेंगे, राइट? सो जस्ट अनदर विजिट चेक दैट विल बी विजिटेड ना हो, सो not visited. Okay, great, not visited. New I bracket new j, right? Then do one thing, that is q dot push new I comma new j
comma. Okay, so there's an issue. I have not put in the curly brackets. Put in the curly brackets. Okay, here comes, and here it comes. And I will do one thing, that is decrease my current k minus 1, because I have wasted one more cell. So my current value will change, and visited would be changed also. Visited new I and new she. Okay, great. Okay, so I have to mark it as true, right? It's not just true. Okay, now I've done this. This is my one complete level being traversed. Now what I need to do, after I have traversed this level, I will increase my number of steps plus plus, because I am going to move on to the next level, right? Now what I need to do is, if I have found a valid answer, then I would have returned here only. Now, so if I don't have found a valid answer so far, then return minus 1. Okay, now let's see what happens. Okay. Okay, great. Let's just run this code, see what happens. Compilation error. M is not okay, so I have not declared M in int. So int M is equal to grade dot size, whereas int N is grade 0 dot size, number of rows and number of columns. Let's just try to solve this and whether it works or not. There is another compilation error. If okay, so I put in a wrong bracket here. That is why I can't kind of despise this kind of long code. Okay, now this shall work. What happened? New I comma current k minus 1. I mean this current k. Just grab this value and put it here. Just try to run this. Let's see whether it works or not. Okay, so I got a wrong answer in this particular case. Here I have got a right answer. It is a minus 1. My output is returning 13, whereas the output answer should be 6. Okay, great. Why this is happening? Okay, why this is happening? Hmm. चलिए ट्राई करते हैं हम लोग की ही इसी के सेल के ऊपर BFS और DFS लगा के. इनिशियली मैं इस सेल पे खड़ा हूँ. ओके, ग्रेट. नाउ द नेक्स्ट टू सेल दैट आई कैन मूव आर दिस. आई विल पुश देम इन माय क्यू, राइट. अभी मेरा स्टेप्स कितने हुए हैं? 1. Now from this particular cell I can go here and here. These are the two, and for this I will make it k minus 1, and for this it will remain same. For this it would be k minus 1. For this it would be remain same. अच्छा, so मैं यहाँ पे 2 स्टेप ले चुका हूँ. ग्रेट. अब अगला मूव मैं कौन सा करूँगा? इफ आई हैव टेकन दिस सेल आल्सो, so I will move here, and if I've taken this cell, then I will move here and then here. Okay, great. I reached this part. This is okay. So मैं 3 मूव कर चुका हूँ. आउटपुट कितना आना चाहिए? एक्सपेक्टेड आउटपुट 6 है और मेरा आउटपुट 13 आ रहा है. वाई? वाई? ओके, मैं अभी तक, सॉरी, मैं जरा ऐसे लेवल बाय लेवल ट्रैवल करता हूँ.
ओके, मैंने अपने फर्स्ट लेवल में इसे ट्रैवल करा और इसे ट्रैवल करा। यहाँ के लिए के की वैल्यू 0 हो चुकी है, यहाँ के की वैल्यू अभी 1 है। ये कितना फर्स्ट लेवल हुआ। Now I move to this particular cell, this is level 2. I move to this particular cell level 2, यहाँ पे सेल की वैल्यू 0 हो चुकी है, यहाँ पे की वैल्यू भी 1 है और ये मेरा सेकंड लेवल है। और यहाँ से भी मैं यहाँ मूव कर चुका हूँ, ये मेरा सेकंड लेवल है। ठीक, अब मैं सेकंड लेवल में जो हूँ मैं कहाँ मूव करूँगा, एक तो मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ, एक मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ और एक मूव मैं यहाँ कर सकता हूँ और यहाँ कर सकता हूँ। राइट, ये मेरा थर्ड लेवल हो गया। ग्रेट, अगला मूव मैं यहाँ करूँगा फोर्थ लेवल, और इन सबसे में मैं अगला मूव यहाँ करूँगा, इससे मैं यहाँ करूँगा, बिकॉज ये सारे मेरे अगले लेवल हैं और की वैल्यू और 1 से डिक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि मैं इस पास से आ रहा हूँ। ओके गुड, नॉट ए इशू। मैं इस सेल से आऊँगा, मैं यहाँ पे आया, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स के इज इक्वल टू 0 और ये मेरा कौन सा लेवल है, ये मेरा फिफ्थ लेवल है क्योंकि मेरा फोर्थ लेवल था, मेरा फिफ्थ लेवल है। और फाइनली मैं यहाँ जब पहुँचा तो ये मेरा सिक्स लेवल है। सो BFS से ये आना तो यही सिक्स लेवल चाहिए था। सो वाई इज माई BFS गिविंग मी 13 एज एन आंसर। ओके, तो डायरेक्शन ज़रा चेक कर लेते हैं, सब चेक कर ले इशू क्या है। मैं अपना करंट ले रहा हूँ, इफ करंट की इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट वेस्टेड, सेल अभी तक विजिटेड ना हुआ हो तो इसको विजिट कर लो। ओके गुड, कि मेरा ग्रेटर देन 0 हो, सेल वेस्टेड ना हो, मैं उसको क्यों मैं पुश करा लूँ, लॉजिक तो सही है। वेस्टेड न्यू इज इक्वल टू आई कॉमा के प्लस प्लस, so I start from my 0 cell, 0 comma k, I pass k, just change this to k is equal to greater than equal to 1. It could be a case, just checking it, nothing else. Also that was not an issue, just checking. Okay, so वेस्टेड में ट्रू मार्क कर दिया, सेल को मूव कर गए, करंट के डिक्रीज कर दिया, करंट के डिक्रीज नहीं किया, then why we are getting 13? Let's just do another BFS traversal कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा करते हैं, पहले एक सेल जो रिमूव करके ट्रैवर्सल करिए वो करते हैं और एक बिना रिमूव वाली करते हैं। ओके ग्रेट, लेट्स जस्ट गो फ्रॉम दिस वन। आई टेक दिस पाथ, अब तक 0 के की वैल्यू 1 है। आई टेक दिस, दिस इज माई सेकेंड लेवल, के की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0। अब तक मैंने स्टेप्स कितने लिए, 2। आई कम हियर, माई की वैल्यू इज 3। ओके, नाउ आई कम हियर, आई कैन गो हियर ओनली। ओके, K4 हो गया, यहाँ पे K5, यहाँ पे K6, यहाँ पे K7, यहाँ पे K8। ओके ग्रेट, के की वैल्यू कितनी, सॉरी के की वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ स्टेप्स हमें कितने लगे, 8। ग्रेट, राइट। अच्छा, इफ आई हैव टेकन दिस पाथ, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 and this is level 5 and this is level 6, right? This should be the only way. Okay, so why our answer is coming 13, not even 8? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, sorry, let's just say 3, say 3 to 5, 5 3 8, 8 3 11, right? 11 is coming the answer, not even that particular thing. ओके, तो ऐसा करते हैं, क्यू में पुश करा करा के देखते हैं कि क्या होगा केस।
सो आई नीड टू वर्क ऑन द क्यू। ऐसा करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर फिगर को। हम लोग को एक बड़ा क्यू चाहिए होगा क्योंकि, एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर। दिस इज माय फिगर एंड आई विल टेक अ बिग क्यू फॉर दिस पर्टिकुलर केस। मैंने लेवल कहाँ से स्टार्ट करा, 0,0 से। इनिशियली मैं कौन से लेवल पे था, 0,0 लेवल। ओके ग्रेट। नाउ व्हाट लेवल आई विल पुश is, and k value is 1 here. Now next is 0 comma 1। after popping this out first level हो गया है, राइट। और ये कितना हो गया, 0,1 पुश हुआ क्यू में, वो किसी के साथ पुश हुआ 1,0। ओके ग्रेट। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन इसके लिए k की वैल्यू कितनी है 0। नॉट आई इशू, नॉट आई इशू। ये मेरे कौन सा पार्ट है, लेवल 2 का पार्ट है ये लेवल 1, ये लेवल 2। ओके, वॉट विल हैपन नाउ इज, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। इससे मैं कौन से सेल पुश कर सकता हूँ, वो है 0,2 एंड दिस इज विच इज दिस सेल। ओके सो दिस सेल इज 1,1, राइट। मैं 1,1 को पुश करा दूंगा। और कोई सेल पुश हो सकता है इससे, नहीं। इससे कौन सा पुश हो सकता था, इससे पुश होता सकता था 2,0। ओके, 0,2 मेरा कितना है, 0,2 पे मेरी वैल्यू कितनी है 1 है। और 1,1 पे मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई के की। और 2,0 पे मेरी वैल्यू कितनी है के की, 0। अच्छा, ये कौन से पार्ट हैं, ये लेवल 3 के पार्ट हैं। अच्छा, अब फिर से ये क्यू बना लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमने इसको पहले पॉप आउट कराया था, फिर इसको पॉप आउट कराया था। अब लेवल में हम 0,2 पे खड़े हैं यहाँ पे। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ। सो आई विल पुश दिस सेल दैट इज 1,2। के की वैल्यू कितनी है 1 है अभी इसके पास। ओके ग्रेट। अब ये पॉप आउट हो गया। अब हम लोग के पास कौन सा सेल है 1,1। 1,1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ। ओके, सो 1,1 से मैं यहाँ जाऊँगा। कौन सा सेल पुश होगा, दैट वुड बी 2,1। ओके ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दिस और कहीं जा सकते हैं क्या, नहीं, और कहीं नहीं जा सकते। यहाँ से भी इस 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, इस 0 पे जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे चला गया था, 2,0 की बात कर रहे हैं ना, 2,0 यहाँ पे था, सॉरी। तो ये पॉप आउट हो गया। और 2,0 जो यहाँ से है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। तो 2,0 से मैं यहाँ जाऊँगा, दैट वुड बी विच सेल। ओके, सो विच सेल वुड बी 3,0। अच्छा, अब सिर्फ एक पाथ के लिए जो है, जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है, दैट इज आर सेल 1,2। 0,2 से हम जब 1,2 गए, इसी में 1 है, बाकी सब के लिए अब के की वैल्यू 0 हो चुकी है। ये लेवल कौन सा, 4। ओके, आफ्टर कमिंग फ्रॉम लेवल 4 हमें लेवल 5 पे मूव करना है। अच्छा भाई, 1,2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ये भाई साहब पॉप आउट हुए, इन्होंने इसको डाल दिया, दैट इज 2,2 इन आर क्यू। ओके ग्रेट, 2,2 आ गया मेरे क्यू में। अभी भी की वैल्यू कितनी है, 1 है इसके लिए। अब 2,1 जो हम लोग का सेल था, 2,1 हमारा कहाँ पे है, ये सेल हमारा 2,1 है। इससे हम यहाँ जा सकते हैं, ये वेस्टेड है, ये ऑलरेडी वेस्टेड है, यहाँ पे ये जा नहीं सकता। सो इट वोंट गो एनी फर्दर। ओके, सो इट पॉस्ट। अच्छा भाई, अब क्या होगा, दिस पर्टिकुलर सेल दैट इज 3,0, ये सेल पे नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिए के क्या है, 0 हो चुका है। ये भी अपने नीचे जाएगा, दैट वुड बी 4,0। सो 4,0 आ गया। ये कौन सा लेवल आ गया हम लोग का, लेवल 5। अब 2,2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 2,2 से हम जा सकते हैं एक और नेक्स्ट लेवल पे। ऑब्स्टिकल रिमूव करेंगे और इसको हटा के हम पहुँच जाएंगे 3,2 पे। 3,2 पे पहुँच गए।
3,2 पे पहुंच गए, लेकिन अब के की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ओके ग्रेट, ये पॉप आउट हो गया। यहाँ पे हम जा नहीं सकते। और हम लोग का अगला सेल कौन सा था, 4,0, राइट। इसके बाहर आउट ऑफ ग्रिड हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे, 4,1 पे। ओके, अब सबके पास टी की वैल्यू क्या है, 0। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल 6। तो मैंने 1 से कंसीडर किया, तो लेवल 6 या 7 हो जाएगा, वैसे 0 से चलेगा, तो उसकी वजह से एक लेवल हायर है। अब ये फाइनली जब ये होगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और ये जब होगा तो जो हम लोग का 3,2 है, जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हमें लेवल 6 रिटर्न कर देना चाहिए, राइट। ये 6 लेवल है। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, आई विल रिटर्न माई नंबर स्टेप जो है 6, मेरा आंसर। तो बी एफ एस लगाने पे तो आंसर सही आ रहा है। सो वाई द आंसर शुड बी 13, वाई माई आंसर इज कमिंग 13 rather than 6। Why why? I have visited done right. I have done this particular things right. Then why my answer is not working? सोचो। मैं हर सेल लेवल को विजिट कर रहा हूँ। विजिट करने से पहले मैं ये भी चेक कर रहा हूँ क्या मैंने के ऑब्स्टिकल रिमूव कर दिए हैं। अगर मैं के ऑब्स्टिकल रिमूव नहीं करे हैं तो मेरा काम बन सकता है, वरना नहीं बन सकता है। तो फिर मेरा आंसर चल क्यों नहीं रहा, तो फिर मेरा आंसर चल क्यों नहीं रहा। चेकिंग सही है, इन कॉमा पे रिटर्न कर गए। मैं एक सेल से अगले सेल पे तभी प्रोसीड कर रहा हूँ, या तो अगर वो ज़ीरो है और विजिटेड नहीं है। अगर वो 1 है तो करंट ऑब्स्टिकल जो के होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और विजिटेड नहीं होना चाहिए उस सेल, राइट। फिर क्यों नहीं चल रहा। जीपीटी से पूछना पड़ेगा क्या मुझे। Okay, so why it is not working? Why it is not working? Should have worked. मैं सही से विजिट कर रहा हूँ ना। ओके ग्रेड 0 है। let's go by line. I initially push k0, k whatever the value k was initially step was 0, while not k empty, while size minus minus. I just take the q front out, q pop. I get the new cell. I check whether it is my last cell or not. If it is not my last cell, then I go in all four directions. If the particular cell is 0, then I check whether it is visited or not. If it was not visited, then I will push that particular cell in Q, and the current value of K won't change if that was 0 only, so it won't change. But if that cell was 1 and current K is greater than 0 and not has been visited so far, then just visit that particular cell and step plus plus. Okay. Mm, let's just go then. What we should do is ask GPT. Now, many of people don't consider asking GPT, but I think if you have spent a good amount of time and have done a dry run, then you have to move forward of that particular problem, because if you keep stuck on that problem, it is good that you will be able to solve it after 1 hour or 2 hours. But the main concept of is not just to solve the problem, it is to learn from errors. Do a dry run. ओके, देखते हैं इसकी ड्राई रन क्या होती है। हम्म,
Okay, so it's telling me there's a bug in my code. Why this does not track visited state with respect to k. Example, visiting 2 comma 1 on the same as visiting 2 comma 1 and 0. You may reach the same cell with more elimination left, which is better. Okay, but this does not track visited state with respect to k. Example, visiting cell 2 comma 1, visiting cell 2 comma 1, 2 comma 1. Oh fuck, ChatGPT. Uh, it's, but this does not track states with respect to k. Example, visiting 2 comma 1 with k is equal to 1 is not same as visiting 2 comma 1 with k is equal to 0. You may reach the same cell with more elimination left, which is better. हम्म, अच्छा, देखते हैं क्या ऐसा है क्या. So it says that I can reach a particular cell with more elimination left, but बात तो सही है. मैं यहाँ से गया 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, राइट. 5 लेवल बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, लेकिन तब तक ये सेल यहाँ से विजिट हो चुका था विथ ज़ीरो एलिमिनेशन लेफ्ट, राइट. लेकिन मैं जब यहाँ से पहुँचा तो इसके पास एक एलिमिनेशन लेफ्ट था. और 1 2 3, जस्ट चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे. लेकिन ये जो सेल है ना, इस सेल पे यहाँ से तो ये ज़ीरो एलिमिनेशन वाला पाथ हो गया, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा भी पाथ आता ना कि जो वन एलिमिनेशन लेके आता है, कि यानी एक एलिमिनेशन अभी मेरे पास बचा हुआ है, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ. बट सिंस आई एम ओनली कीपिंग ट्रैक ऑफ, मैं सिर्फ अभी ये ट्रैक कर रहा हूँ कि करंट सेल पे मैं बस पहुँच जाऊँ और उस पर नंबर ऑफ के प्रीवियस से डिक्रीज करके ला के रख दूँ. अब इसकी वजह से क्या हुआ, ऑल दोज चांसेस दैट दिस सेल हैड टू गो हियर with k0 और k is equal to 1 were removed because of this particular scenario. तो ये जो केस था ना कि यहाँ पे k is equal to 1 वाला जो सेल आके चेक करेगा, वो कभी आ ही नहीं पाया. जो मैं डीएफएस में ब्रूट फोर्स कर रहा था ना कि हर एक पाथ में सारे के की वैल्यू रख रख के चेक कर ली, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो चेक तो हो रहा है लेकिन जो के की वैल्यू है ना, अब मैं यहाँ पे विजिट कर दिया और मैं विजिटेड सेल को दोबारा मूव भी नहीं कर, यानी चेक भी नहीं कर रहा. उसकी वजह से मैं एक सिनेरियो मिस आउट कर गया जिसमें के की वैल्यू यहाँ पे 1 होती, तो वो सिनेरियो मेरा मिस हो गया. अच्छा, तो उसके लिए मुझे एक 3D वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा. तो अगर मुझे एक 3D वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा तो विजिटेड एरे कितने का, हाँ ये कितने का बन सकता है विजिटेड हमारा, 40 क्रॉस 40, देयर कैन बी 1600 cells, right? So you can just make it 1600. Or what I need to do is here I will have to do one thing, that is check for the current k ना. जो मेरा करंट k है उसके लिए चेक कर लेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे, फिर वही करंट k. ओके, let's just try to run this now. Let's see what happens. ओके ओके, पहले तो गड़बड़ी आएगी यहाँ पे क्योंकि करंट के हमने वो नहीं करा हुआ है. सो यहाँ पे ब्रैकेट में पहले करंट के डाल दें. ओके, और यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे हम अपने करंट को डिक्रीज कर देंगे एक से, करंट के -1। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू रन दिस। और कहीं तो वेस्टेड नहीं है, अभी भी रॉन्ग आंसर आ रहा है। अब तो और बड़ा आंसर आ रहा है, आउटपुट 2 आ रहा है। वाई क्यों पुश कराया, चेक कर लिया क्या करंट की विजिटर नहीं है। यहाँ पे आई ग्रेट न्यू आई जे इक्वल टू 1 अगर है, और करंट की ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट वेस्टेड करंट एंड करंट आई आई न्यू जे करंट की -1, करंट की -1 बिकॉज यहाँ पे के की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी एक से। ये अभी भी गड़बड़ आंसर आ रहा है। ओके, इट इज गिविंग 20 एज आंसर। ओके ग्रेट। ओके, अब क्या गड़बड़ी आ रही है। I have a grade, I push it in my queue, steps would be 0, 0, while not empty, size, minus, vector in temp, queue front, queue pop, pick I, j. If current I is equal to m-1, return number of steps. For auto, the directions, just go direction added. If I'm not going out of bound, then it's well and good. Not visited, new I, new j with current k, great. Q dot push current k and wasted current chaos also true, great. If great new I new j is equal to 1 and current k is greater than 0, okay great, and not has been wasted new I new j and current k -1, that is also great. Now what I need to do is push this in my code. I push this in my code, visited steps plus plus return number of steps. And why the hell I am getting 20 as my answer when I should just get 6? It is far beyond what should be the answer. what, what shall be the issue in this particular thing? I'm taking everything fine, nothing from my side. Okay. If current I is equal to current J and return number of steps, 4 direction I can move. I pick up 4 direction. Check that I'm not going out of bound. Okay, I do that also very well. I go to my great new I new j. If that particular cell is 0 and has not been visited with current k, then q push new current k, great. Then what is the issue mean? What is the issue? What seems to be the issue, man? 1 to m. Greater than equal to. So if the value was greater than equal to 1, then we should be it. No 1. This is what we are missing this. Still the wrong answer, great. No, 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 no.
And this should fucked up and the solution should be working and it is not working. Then you should just ask GPT. Don't waste too much time. Just see what is the issue with the code. What is the code? I'm increasing my number of steps. Um, I think I'm increasing my number of steps, right? Okay, so this is the issue. Let's just see what happens. Okay, so this was where I was fucking up. Let's just try to submit, and we failed at a very great rate. 20 out of 55. Output minus 1, expected 2. Expected 2, output minus 1. So it should be. Grade is 0, comma 0, comma 0. There should be two steps. You can go in four direction. Okay, I can go in four direction and should just move to those cells, right? You just move in those particular cells and it will count the steps. This is first step, this is second step. Now what is seems to be the issue, man? Uh, get another wrong answer. K is equal to 1. Okay, what is the issue now? F0 and move to the next cell easily. This will increase the steps because this is pushed. Now with this current I is equal to m minus 1, current j is equal to n minus 1, right? Hmm. Then what is the issue? Just keep messing with me. Why it is getting minus 1 as output? It should just simply return 2 as output. Have I put in it again at some wrong place? Just put a blue one down. Complete while. Let's increase the number of steps. While size minus minus, then Q front, Q size. What is the issue? It should just go from this to this. Zero Q size, Q 0, comma 0 with K. So this would only happen if I am not able to reach here. Minus 1 comma 0 0 comma minus 1 1 comma 0 and 0 comma 1. These are the four directions in which I can move. Since these are the next cell, it should just move in 0 comma 1. So each of these particular case would move 0 comma 1. You have 0 comma 0 and then I will go 0 comma 1. I will push them in my queue. At this particular moment, I just fucked up.
Okay, let's just RGPT. Okay, let's use why it's this failing. Just a minute. Your current listed array. Okay, so I'm not. Damn, man, just messing around with me. Huh? Then I will just let me just name set. Name set visited. Call it. It. Now after calling is visited, I will just mark them false, and size of would be visited. Let's just try to run this. Compilation error. Okay. Okay, guys, it has worked. So this was a BFS solution for this particular problem, and as you can see, it's quite a lengthy solution, and it would take took me quite a lot of time, and the debugging part of this kind of solution becomes quite a hassle for me when I made some spelling errors, especially this particular wasted part, this concept, this of current k and k minus 1. This was something that I was also messing it out. So I guess you have to learn new things every day. Yeah. So this was a good problem. Took me two GPT, two GPT obstacles, right, to solve this particular problem and find the bugs. This particular current key, because I was missing this particular case, whole case, that I can reach this particular cell with a decreased value of k and without a change of value of k also. Okay, great. It's was a good question. It helped me to understand problems better. Okay, now moving on to the next problem. Before I move to the next problem, let's just take a water break because I've been recording for quite a long time. I think it's been already a 1 hour video by solving this particular problem only. Okay, so not a big issue. What we are going to solve is similar string groups. Okay, something. Let's just get me water and let me deal with this next. Okay, now good for the water break. Now let's get down to business. What is this question asking? Two strings x and y are considered similar if either they are identical or we can make them equivalent by swapping at most two letters within the string x. Okay, for example, tars and rats are similar strings. Swapping at position 0, comma 2 and rats and arts are similar, but star is not similar to tars, rats or arts. Together these form two connected groups by similar string, that is stars, rats and arts and star. Notice that tars and arts are in the same group even though they are not similar. Formally, each group is such a word in the group if and only if it is similar to at least one other word in the group. We are given a list string of string where every string in strings is anagram of every other string in str.
How many groups are there? Okay, quite a complex statement, I have to say. This particular string question has quite a complex statement. So, what are the particular things? Let's just try to copy these values. Let's see whether we can paste this value. Okay, we can paste this value. Okay, can we get it bigger? Yes, we can make it bigger. So we have tars, rats, and arts. Now let's just see. Tars and rats are similar. Why tars and rats are similar? Let's just say we have tars and we have rats. Two strings are similar. Two string x and y are considered similar if they are identical, or we can make them equivalent by swapping at most two letters in distinct position within the same string x. Okay, we can swap two letters in a string at most. Okay, great. So we have tars and we have rats. Now in this particular string, let's just use a different color. T and R does not match, does not match. A matches, A matches. R and T does not match, not a issue. S matches, S matches. Now R and T, let's just try to swap T and R in this, so it becomes R and T, which matches with this particular string, and this string T matches with this, R matches with this, so they become a part of one group, right? Now let's use a different color because I think arts is also the part of this group also, right? Now let's just consider arts and tars first. So A does not match with T, so A does not match with T. Now R does not match with A, R does not match with A. T does not match with R, T does not match with R. Only S match with S. So they are three different characters, so we can't make them equal. Okay, not a issue. Now A does not match with R, A does not match with R does not match with A, R does not match with A, T match with T, S match with S. Now we can swap these two characters and then it would match for this and for this, right? So this would become a one group now. So we can say uh, we have rats, and since from arts I can go to rats, then and because from rats I can go to tars, that is why they are in a one group. Okay, but um, but okay, but how come we make two strings equal? Oh, no, I can make two strings equal. I will write a just a function to check whether these two strings can be swapped to make equal, and then I will check for this. Okay, great. But how will I make sure that why this is a graph problem? Because that's the first thing that is right. Because for now, the only thing that I have in my mind is that what I would do is I can create a map, and in my map, what I would do if I get rats and tars. Now, if when rats and tars are good, then I will increase rats frequency. Neatly rat frequency, everyone would have one frequency, but if the character matches, then I would decrease one frequency to zero and add that frequency back to this particular parent. Now when arts will match with rats, I will increase the rats frequency again and arts frequency to zero and this to zero. Okay, for better example, let me just draw it better. So what I would be doing is I can just have a map in which I have rats, then tars, and then I have arch and star, right? Initially, all of these will have frequency 1.
I can just make them one in a single traversal, not a big thing. Now, when I match with these stars and rats, now these two will match. So one of these will decrease its frequency to 0 and one of these will increase its frequency by 1. And in similar fashion, when rats will match with arts, art would reduce its frequency to 0, but rat would increase its frequency to 1. And when a star wouldn't match with any of these, it would reduce its frequency to, it would remain its frequency there. So all these particular would have, so there will be two groups, right? There are two groups because there are only two elements in this map that have frequency greater than 0, right? So I can simply do that. But for doing that, what I would be doing is doing uh, a for loop every time for each number, right? There could be a case, right, that this star might match with this star. So what I have to do is check with this and this, and similarly for this stars I will check with this this, right? Now there's this thing that I can just check from forward, right? I'll just do one thing, that instead of checking for everything, I'll just do like this. Okay, sorry. What I will do is check for stars. I will check with rats and with arts and with star. For rats, I will only check with arts and star, and for arts, I will only check with star. So it would be a order of n square thing. So I can do it in order of n square. After that, I can just do a simple traversal on map, right? Why convert it into a graph problem, right? Now the thinking is simple. Why I convert it into a graph problem? I can simply solve it in a map way. This map solution is also looking very good, and the same number of traversal will be required, right? Won't require any special thing. This is also a thing, but in my map solution there would be this case in that which particular group frequency that we have to increase. Now, what the issue is, when this star, let's just consider that this star mapped with the stars, right, and did not match with rats and arts. Now tars frequency was already 0 because of rats, right? So this star only match with this star, so it will increase the frequency of tars, but tars is connected with rats. So how come I will create a relationship? So to have that relationship, आई नीड टू क्रिएट अ ग्राफ। तो भाई उस रिलेशनशिप को समझने के लिए कि कौन सा किससे कनेक्टेड है, उसके लिए मुझे ग्राफ चाहिए। वो तो ये मैप से भी सकता है, ये मैप वाला सॉल्यूशन बन तो रहा है, लेकिन इस मैप में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे ना। अब ये जो रैट्स है और टार्स है, चलिए रैट्स और टार्स था तो रैट की तो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, टार्स की जीरो हो गई। आर्ट्स को तो रैट्स ही पता है, सोचिए आर्ट्स को रैट ना पता होता, टार्स पता होता, तो अगर आर्ट्स को टार्स ही पता होता तो टार्स के पास जाता, टार्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता। अब टार्स फिर से जाके पीछे अपनी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ना बढ़ाता कि मेरा पेरेंट तो ये है इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ। तो रिलेशनशिप तो हमें यहाँ भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब ये रिलेशनशिप हमारे मैप से इजीली इस्टेब्लिश हो जा रही है कि अगर कोई फ्रिक्वेंसी दो कैरेक्टर चेंज करके स्वैप करके स्ट्रिंग कन्वर्ट हो पा रही है तो दे आर कनेक्टेड। अगर आर्ट्स और रैट्स जो हैं कन्वर्टेबल हैं तो दे हैव अ बाई डायरेक्शन एज बिटवीन देम, राइट? तो सिंपल है, ग्राफ जैसा फिगर है। हम एक एच से दूसरी जगह जा सकते हैं और फिर हम इसके ऊपर डीएफएस चला सकते हैं कि भाई डीएफएस में जितने विजिटेड हो जाएंगे वो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा और नंबर ऑफ डीएफएस जितनी हमें चलानी पड़ेगी वो हमारा भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल, राइट? सो इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे कि और डीप में जाएं इसमें, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। द मेन कॉन्सेप्ट बहुत दिस, क्योंकि हमें ये समझना था कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश क्यों करना पड़ेगा, उसी के लिए मैंने ये मैप वाला सॉल्यूशन बताया कि अगर मैं मैप बना के करने की कोशिश करूँ तो वो भी हो सकता है। अब इसके लिए रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी मुझे एक मैप बनाना पड़ सकता है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि बिना ग्राफ नहीं हो सकता, एक मैप बना के एक और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करी जा सकती है, बट दैट वुड बी क्वाइट हेक्टिक, क्योंकि एक मैप में बनाओ उसके लिए ये पैरेंट स्टोर करो, फिर उसके लिए इनका ये पैरेंट था, ये अपने पैरेंट पे जाएंगे, अपने पैरेंट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे और ट्रैवर्सल में ये अपने पैरेंट की बढ़ाएंगे। सो दिस वुड
काइंड ऑफ बिकम chaotic. सो इसको ना करके हम सिंपली ग्राफ बना के रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देंगे, क्योंकि ग्राफ की रिलेशनशिप ही तो है और कुछ थोड़ी ना है. ओके ग्रेट. नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ विल बी कोडिंग दिस. तो सिंपल बी एफ एस और डी एफ एस दोनों यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई ऐसा खास हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकालना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है. इस सॉल्व मेरे पास दो स्ट्रिंग्स होंगी. स्ट्रिंग्स एट द रेट s1 कॉमा स्ट्रिंग एट द रेट s2. ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे भाई दो स्ट्रिंग को चेक कराना है कि करेक्टर है. सिंपल सी चीज़ तो है, मुझे से दो करेक्टर ही तो चेक कराने हैं कि क्या स्वैपेबल हैं कि नहीं. s1 डॉट साइज. ओके, नाउ count is equal to 0. This is a count of number of swaps that are required. Okay, plus that is if s1 bracket I is not equal to s2 bracket I, then do one thing, that is count plus plus. Now simply just do is return count is equal to 2 or count is equal to 1. Sorry, 0. Why? भाई तभी तो स्वैप करोगे जब दो ही कैरेक्टर का अंतर हो. अब अगर एक कैरेक्टर ही का डिफरेंस है पूरी स्ट्रिंग में, तो वो किससे स्वैप कर दोगे. जहाँ पे स्वैप करोगे वहाँ पे फॉल्स केस राइज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिसमैच आ जाएगा, राइट ना. इसलिए वहाँ पे दो और जीरो का स्वैप. मैं समझता हूँ ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हम लोगों ने बहुत बार लिखा हुआ सॉल्यूशन है कि ये स्वैप वाला सिंपल सा चेक एक फंक्शन है. इसमें हमने कोई ऐसी माइंड बॉगलिंग कोई वो गणित नहीं लगाई, राइट. ओके, सो नाउ वी कैन जस्ट create a simple int n is equal to strs dot size. Now what I need to do is ordered an ordered map that would be storing our int नहीं सॉरी int ही सॉरी राइट int ही तो स्टोर करेंगे. int comma vector int. Okay, let's just call it mp. Now what I will do is for int I is equal to 0 dot I is less than n dot I plus plus for int j is equal to I plus 1 dot j is less than n dot j plus plus, right. Okay, what I need to do is now check if is solve str's I comma str's j, then have a mp where I dot push back j and mp j dot push back I, right. I'm creating a bidirectional edge between them, right. Now what I will do is write a simple DFS. For that I will do is first for DFS I will create a vector bool called visited that I usually do, right. I've created a visited. It would have n number of element in it, and all of them would be marked false initially. Now what would we do? Count equal to 0, because the number of times we call a DFS, we will be increasing a count for int I is equal to 0 dot I is less than n dot I plus plus. Now for each string I we will check if not visited I, then do one thing, do what, called DFS. Okay, I have not declared my DFS so far. I would need to declare my DFS. So let's just write a simple DFS, that is void
DFS void DFS, we will pass our initial node from where we will be starting unordered map, int comma vector int let mp, and we will pass our vector, sorry, bool, call it visited. Only these three things, I think, nothing more would be required. And visited u is equal to true because this particular node has been visited. Now for int the rate, so we what we need to do is call in our mpu, and if what not visited, where is that, visited, visited, we then do what, call dfs for v comma mp comma visited, sorry. Okay, great. After this I will do same here, I comma mp comma visited, and increase the count plus plus, and after that I will just return the count. Now I hope if there is no spelling error or no compilation error, then this code shall work, and if there is compilation error and there is spelling error, then it should go to hell. Woo. Okay, let's just try to submit this. Oh great, it works. Time complexity would be order of n square, and space complexity we can say order of n. That's great because I think, is there any better solution for this? Uh, uh, yes, there can be a solution, but that solution is not related to BFS and DFS. That solution will come down to disjoint set union. We will tackle disjoint set union after our day after tomorrow. We will start, no, after a day after tomorrow. Disjoint set union we will do later on this particular graph series. So for today we will skip the disjoint set union solution and we will work forward. Okay, now this particular solution. Okay, great. Now this question, how many problems are left? If the number of tabs I count, 3 3 6 6 3 9 9 1 10. Okay, I am damned tonight. This one already, the video is around more than 1 hour, I guess, because I started recording it around 11:30 at night. So nearest time I can escape this is around 2 or 3. No, it will take more than that, I guess, because I promised to make this video long enough. I will make this long enough. Okay, so this is minimum genetic mutation. A gene string can be represented by an 8 character long string with choices from A, C, G, and D. Suppose we need to investigate a mutation from a gene string start gene to gene string end gene, where one mutation is defined as a one single character change in the gene string. For example, AACCGTT change to AACCGTA in one mutation. There is also a gene bank that records all the valid gene mutation. A gene must be in bank to be make it valid gene string. Given two strings start gene and end gene and the gene bank, return the minimum number of mutation needed. Okay, minimum number of mutation needed to mutate from start gene to end gene. If there is no such mutation, return -1. ओके ग्रेट, तो हमारे पास एक स्टार्ट जीन है और एक एंड जीन है, राइट। और हमें क्या करना है, स्टार्ट जीन से एंड जीन रीच आउट करना है। एक जीन म्यूटेशन में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर चेंज हो सकता है, गुड। अब सारी जीन सिर्फ कितने कैरेक्टर से बनी है, 4 कैरेक्टर से बनी है, ACGT। तो एक जो कैरेक्टर चेंज होगा वो इन्हीं 4 कैरेक्टर्स में से कोई एक सिंगल कैरेक्टर चेंज होगा।
Okay, great. Now what I will need to do is to check that if I can reach from start gene to end gene, and if I can reach what is the minimum number of mutation required. Okay. एंड देन देयर इज ऑल्सो दिस बैंक जिसमें मुझे वैलिड चेक करना पड़ेगा कि जो भी म्यूटेशन सिंगल कैरेक्टर में चेंज करूँगा अपनी स्ट्रिंग में स्टार्ट जीन में, तो वो अगर बैंक में प्रेजेंट होगा तभी वो एक वैलिड म्यूटेशन है, राइट? ओके ग्रेट। सो मेरा लास्ट म्यूटेशन भी मेरे बैंक में होना चाहिए तभी मैं एंड जीन में पहुंच पाऊंगा। ओके, दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो start gene, end gene, and then there's this bank. From the start gene, I need to reach this end gene, and what I can do is change a single character in this whole string, right? So for every character, I can change it to four different characters, right? So n cross four. The n is the length. Every character will change into four different characters, and if that character is present, if that particular change is present in the bank, then it's a valid change. Okay, good, great। बट ये चेंज होगा कैसे अगर मैं पहले टर्न में ए को चेंज कर देता हूँ, राइट? लेट्स चेंज इट टू सी, देन जी, एंड देन टी। ओके, तो फिर मुझे इस ए को भी चेंज करना, क्योंकि ए चेंज होके भी आंसर आ सकता है, ये सी चेंज होके भी आ सकता है, और हो सकता है दो चेंज होके आंसर आए, हो सकता है तीन चेंज होके आंसर आए। तो ये जो डिफरेंट चेंजेस है इनसे कैसे डील आउट करा है? ओके, लेट्स जस्ट कॉपी दिस इन आवर बोर्ड। ओके ग्रेट, टू बिग। ओके, इनपुट स्टार्ट जीन, end gene, bank, whatever I need to do is just select this particular part, right? Control C. Okay, just remove this particular input of this deletion. Okay, much better. I need to start from here and then I need to go here। चलिए देखते हैं। ये ए जो है इसको सी में चेंज किया जा सकता है, इसको भी सी में चेंज किया जा सकता है, इसको भी सी में, इसको भी सी में। So all these particular can be changed into C once, right? अच्छा, जब ये सी में चेंज होगा तब क्या ये सी में चेंज होगा? नहीं, ये सी में चेंज हो गया, यानी एक चेंज हो गया, राइट? और ये चेंज जो करा मैंने, ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरे बैंक में है कि नहीं। अगर नहीं है तो देन आई कांट मूव फॉरवर्ड। देन आई कैन डू इज would do one thing, I would change this particular character and then this and this and this। अच्छा, लेकिन चेंज एक बार तो हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा बार हो सकता है। So how will I know how many number of times I need to change so that I can reach this particular position, right? That becomes an issue. Okay, great. So if I just can't change it one time, two times, so there's no limit. I can just change it unlimited times until I reach there, and if there's no way, then we have to return -1. So if I change a particular character in this string, and that is also present in my bank,
then that is a valid change, right? And I can store that valid change, or I can move from that valid change to the next valid change. And let's just see for this case. Okay, so we had this original string a double c double g t a. So I changed this particular t to a. Okay, great. Now what I did was change this g to this c. Okay, great. This was also a valid change. And after this, okay, so the valid string is ACGTA. Okay, so only I needed to change this one character. Okay, great. Hmm, so how come I have to do this? Uh, what can I do is, uh, first time I will change all these character ones to all the four characters that are available. So for one, I will change it to uh, for this particular one on my level one. This it can be changed into four characters, and similarly there would be four solution here for this and this. And why would be these solution valid? We will change one character here, and then I will check in my bank if that particular character exists in my bank or not. If that particular character exists in my bank, then that is one valid way. So I will store that one valid way, and that one valid way is my one step ahead for the mutation. I don't know the final mutation. When I will reach the final mutation, I will check the top of my queue where I will be storing these mutation. So when I change single character in this string and that change is already present in my bank, then I will store that change in my bank that this is a valid change, right? Now, if I store that in my queue that this is a valid change, so what I can do is pop that from my queue and then again make the change in all the particular character of this string with the four available characters, and then see if that is a valid string or present in my bank. If yes, then store that again in my bank, and in similar fashion until unless I reach till the last string or I exhaust all the particular solution. That would be my solution, right? mm, Guess it should work with this approach. Okay. So if I have to work with this approach, let's just try to work with this particular approach that I've thought of. Control Z, Control Z. Great. Now, uh, I need to have a queue, right? Q U E U E Q. What will it hold? It will hold a string Q to store the valid string that we may take. And initially I will push my start gene. Okay, great. Now while not q dot empty int n is equal to q dot size
while n minus minus sorry int sorry string top is equal to q dot front and q dot pop it out of the way, right? Now what I need to do is, if top is equal to end g, then it should return true. No, it should return the number of steps. So return steps, simple BFS. So steps should be declared earlier, right? Steps is equal to 0. Okay, great. This is steps and this is good. Now what I need to do is, this top string, for each string character it would be changed into 4 different characters, and all these characters will be checked in this particular bank, and if they are valid and present in bank, then I will only push them in my queue, right? So for uh, char ch, we call it, what do you have, we have a c g t. These 4 characters are the ones that we can change into, right? Then for int I is equal to 0 dot I is less than, what is the top dot size, dot I plus plus. uh, Now what I need to do is change this particular character, right? So string neighbor, so I call it neighbor, let's say me. So what I will do is take my top in this, and what I will do is neighbor I would be changed to ch. I will change one character, right? Change one character, right? After changing the one character, I need to do also one thing. I need to do check it if, so I need to create another thing, that is a visit, or sorry, uh, set or map, so that I can access the string fast. So this is a vector. I think I should create an unordered set, that would be best. Unordered set, set, that will bold string. Okay, now what I will do is set for it, and what I will do is just push bank dot begin, bank dot end in my bank set. Okay, great. Now what I need to do is, in this if, I need to check if the neighbor is present in this particular bank set. Okay, great. If bank set, this particular moment my eyes are burning, so sorry for typing this slow. This thing, that find name is not equal to bank set dot end, to say I was not able to find this particularly in my way, then what I should do is do nothing, then dot push ne nei, right? Right. Now I will make sure that I just don't mess it around. After this I will just include a step plus plus. This is step, no, it's steps. So this steps plus plus, and if nothing works out, then I will just return -1. Right. Now let's just try to run this, whether it works or not.
Pretty basic approach. I think it should work. Okay, there is compilation error. Okay, so it is working here and here. Let's just try to submit it. TLE, time limit exceeded. Why I'm getting a TLE? Richard, Mansit, QMT and size, string for top the string. Okay, let's see what we have done. We have a string. In the string, push the start gene and then start this. And push this in my queue and then do a basic BFS. And after doing this BFS, she can find it in my bank. Okay, so the first thing that I'm missing is the visited array. Visited array is missing in this particular answer. So I need to make a visited. Let's create a, what should we use? Visited bool. No, it would be better to use unordered set in this particular solution. Test string. Let's just call it visited, right? And in this visited, dot insert my start gene. Now this has been pushed in my start gene, and I should change my condition also. And then visited में भी ये find out नहीं होना चाहिए ना, right? Visited dot find me is not equal to, sorry, it should not be present in that. So visited dot end, then only do this. Also do one thing, that is visited dot insert what me in it. Now this shall work, I guess. Try to submit it. Okay guys, so we were able to solve this particular problem. So this one was good and we were able to solve this. Now what we shall do is move to our next problem. Lexicographically smallest string. Okay, lexicographically smallest string. You are given a string of same length s1 and s2 and a string base str. We may say s1 I and s2 I are equivalent character. For example, if s1 is equal to a b c and s2 is equal to c d e, then we have a is equal to c, b is equal to d, c is equal to e. Equivalent character follow the usual rule of an equivalent relationship. Reflexivity A is equal to A, symmetry A is equal to B, implies B is equal to A. Acha, okay, A, okay. Transitivity A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. Okay, for example, given the equivalence information from S1 is equal to A, B, C, S2 is equal to C, D, E, ACD and ABB are equivalent. Why ACD? Okay, so let's just first understand this. We have ABC and we have CDE, and then ACD and AAB are equivalent string of base string EED, and AAB is the lexicographically smallest equivalent string of base string. Term it. Okay. Let's try to understand from the example. Input S1 Parker, S2 Morris, base string is parser. Okay. Based on the equivalency information in S1 and S2, we can group their character M, P, M, P, A, O, K, R, S from R to R
from K to R, and from R we can go to S. Okay, KRS, and from E to I. The characters in each group are equivalent and sorted in lexicographically order. So the answer is MAKEEEK. Okay, let's just copy this example in our whiteboard and just Control Z. Let's just remove this and just paste this. Okay, what is the issue? Output. Okay, much better, I guess. Explanation. Okay, great. Now let's try to understand it on our whiteboard. Why it works. So we have Parker and we have Morris and we have a base string that we have to convert. Now it says M and P are group. Let's just write, okay, if there's a way to pick this particular part only. I don't guess there's no other way. I just write Parker and then Morris. Sorry, I have to write Parker, and we also have Morris. Right, now what we have is M and P are grouped together. So for M we can go P. Okay, change it to P. Or we can say, because it is following all the rules, A is equal to A is equal to B, then B is equal to A. So I can change P to M and similarly M to P. So I can change P to M and we can change M to P, right guys? Okay, now we have A to O, right? Similar relation. We can go A to O and O to A, right? Good. We can go R to R. Now R to R is nothing new. We can go from same character to same character. We can go K to R. Okay. We can go K to R. In a similar fashion, we can go to R to K. Okay. We can go E to I and I to E. E to I and I to E. And finally we have R to S. So we can go R to S and S to R, right? So this is in one group. Okay, great. This is in one group. This is also in one group. Okay, great. But since we can go K to R and we can go R to S, so we can go S to R and R to K and K to R to R to S. Why? Because of this transitivity rule. A is equal to B, B is equal to C. So A is also equal to C. So this S is equivalent to this K, because we can go R to K and from S to we can go R. So from this R we can again go to this K. So now if you see what this is a graph. These are nothing else than graph nodes. From one node you can go to another node and then you can go to another node. So what you need to do is nothing special. We have this particular string. What is the string? Base string parser. Okay, we have parser. Par from P, where we can go? We can go to M. Okay, from there onwards we can't go any further. Okay, from A is the best solution for A. I won't go any further. From R, where we can go? We can go K. From S, where we can go? We can go to R. And from R, where we can go? We can go K. For E, where should we go? E should remain E rather than I. From R, where we can go? We can go K. So what is this? This is for each character. For each character in the string, we are doing a simple DFS to find the minimum character that can be reached
by starting that particular node. From A to A, from R we can go K, from S we can go to R, from then R we can go to K. This is the minimum solution that we can reach. For E it would remain E, but we could have gone to I, but it would have changed the lexicographical order, so we won't change the character to I. And then from R again we can go to K. Okay, so for each character in this particular string, so for each character, do a DFS and find the best smallest replacement of the string, the char, right? Nothing special. ओके, तो अब ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा? भाई देखो, दो स्ट्रिंग है, अनऑर्डर मैप बनाते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देंगे, एक सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा। बाई डायरेक्शनल एज बनानी है हमें, तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कुछ, राइट? और इसको हम बीएफएस से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बीएफएस से नहीं कर सकते, बट जिसमें देखो इसमें सबसे डेप्थ तक जाना है, राइट? ऐसा नहीं कि इसे बीएफएस से नहीं करा जा सकता, लेकिन डीएफएस से इसे प्रेफर करेंगे। चलिए चलिए ट्राई करते हैं, कैन वी सॉल्व दिस? वेल आई गेस आई कैन सॉल्व दिस अनऑर्डर्ड मैप, ओ आर डी ई, ओ आर डी ई आर ई डी मैप। वी हैव व्हाट, वी आर मैपिंग कैरेक्टर टू कैरेक्टर। वैसे हम इनटू कैरेक्टर, इनटू इंट भी मैप कर सकते हैं कैरेक्टर को नंबर चेंज करके, राइट? बट आई गेस दैट शुड बी नॉट डन. What we should do is vector vector, let's call it mp. Now what I will do is go for string 1 and string 2. So for int I is equal to 0 dot I is less than n dot I plus plus. I have not declared n so far, I need to declare n is equal to s1 dot size. Okay, great. Now what I need to do is pick the particular character. So char ch1 is equal to s1 bracket I, and char ch2 is equal to s2 bracket I. Great. Now what I will do in mp ch1 dot push back ch2, creating a bidirectional edge. So we will do again same thing but with ch2, push back ch1. Okay, great, basic thing. Now what I need to do is write a DFS, and for the DFS I need to go on the basic string. Okay, so for int I is equal to 0 dot I is less than. Okay, so I need to find the base string length also. So int m is equal to, what is it, base str dot length gth. After this what I will do, just do nothing, and just now what I need to do is find the minimum solution for each character, right? Now char ch would be base str I. What I need to do is run a BFS. Now what I will do is create a visited every time, because earlier what, oh, sorry, vector bool should be, okay, vector bool visited, sorry, visited. Now for every time I created a visited vector. Why? Because अगर मैं पिछली बार वाले का ही वेस्टेड लेके अगले वो कैरेक्टर के लिए चला गया, तो मैं उसके बेस्ट सोल्यूशन को मिस आउट कर सकता हूँ। इसलिए मैं रिजल्ट बनाना भी भूल गया हूँ, मुझे एक रिजल्ट भी बनाना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ स्ट्रिंग रिजल्ट दैट विल रिटर्न माय रिजल्ट, so result dot push back, दैट वुड बी माय बेस्ट सोल्यूशन। सो उसके लिए मुझे एक डीएफएस भी कॉल करनी पड़ेगी। सो यहीं पे कॉल कर देते हैं डीएफएस को। What is the DFS? We'll
pass our MP, and what we will pass? We will pass our character, and what we'll pass our visited. Great. Now what? Now what? Nothing else. Just return the damn result. Okay, returning the damn result. Okay, now what I need to write is a DFS, a simple basic DFS that would return a character to me. Char DF. Okay, DFS. What I have, unordered map, ORDERED map. Sorry, we have char vector char. Sorry, MP. We have a char. We can call it U, and then we have vector bool visited. Right. Yeah, vector bool visited. Now what I will do is visited. Uh, what I will do is visited char is a equal to true. So should we mark true? I visited this particular character. Now what I will do is, what is the minimum character that I can find for this particular character? The original character itself, right? Min char is equal to u itself. Initially, I will start from here only, and then I will replace this character as I will go in depth of the DFS. Need to say, uh, initially S was the best solution, but after the DFS it goes to R. For R, it is the best solution. Then this R goes to K. For this K, it is the best solution. But since there is nothing after this K, so K will return to R. Now R will compare it is the best solution with the solution its child has given it to. So the R would say, okay, my child is better, then return it to its parent. That is S. S was considering itself the best solution. Now it will compare it with the K, and it will realize that it is not the best solution, but K is the best solution. Okay, great. Okay. So we have char v that would be going in MP of my current U. Okay, now what I need to do is, if visited, okay, v minus a is equal to false, then do what? Then do DFS, and that DFS will do one thing, that is comparison after this. So minimum of min char comma d, sorry, DFS of, where we do MP comma b comma visited. Visited. Okay, great. What I will return? Return the min char. Okay, great. Return the min char. Now what I will do? I don't think that I need to do anything special. I have already returned the result, and this was also returning the result. Okay, now it is pretty good. I guess there's no rocket science in it. You just try to run this. If it runs in once, then it will create this compilation error. Okay, so I have done this. Instead of u, I have just subtracted char directly to it. So let's just try to run it, whether it runs or not. Now let's just try to run it. Okay, okay, now it runs. What is the time complexity of this? Okay, so what is the length of this string? This is string m. So order of m, sorry, order of m here, and after that for each character what I am doing is running a DFS, and that DFS is, we have, uh, we can say v plus e, v vertices and e edges. So what it would become is, into bracket, uh, order of, sorry, order of v plus e.
So it would turn out to be this. Okay, so we can write it as order bracket m cross bracket v plus e, right? So this is our time complexity for this problem. Okay, great. uh, mhm. What we can do is, if we could have stored the characters somehow, then we could have got a better solution, but we have to do a DFS to reach that particular point, and for every character we will do that DFS. Is for each solution we can store the best answer, but that would increase the complexity of this particular thing, that it is pretty easy explanatory here, but if I go with that particular logic, it will become complex. So now for this solution, let's just stay here. The complexity is order m into v plus v. Now, how many problems are left? There are 3, 3, 6, 6 to 8 problems left. Okay, 8 problems are left right now. Uh, what are those? Stone removed, number with same consecutive difference, minimum score of path between two cities, max area, count individual pair of nodes, and find closest node to two given nodes and longest cycle in a graph, right? Hmm, these are the problems that are remaining. Guess I would be stopping here because it already 127. So I would stop here and I would continue from here from tomorrow. Okay. So I get this is already 2